All right. So my screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay. So we have already discussed about the rain gauges, even some snow gauges also. So what we have learned that if there is a catchment area, एक कोई catchment area है, ठीक है? Depending upon the variation of the rainfall, ठीक है? जैसे हो सकता है इस एरिया में कुछ डिफरेंट रेनफॉल हो, इस एरिया में कुछ डिफरेंट रेनफॉल हो, इस एरिया में कुछ डिफरेंट रेनफॉल हो, ठीक है? So we can divide the catchment area depending upon the intensities or the pattern of the rainfall it has. ठीक है, अब हम क्या करेंगे उस पैटर्न के हिसाब से we'll decide how many number of rain gauges we need. Maybe we can put one station here, we can put one station here for each variation of the area or inside the area, right? There could be many. ठीक है, पर अब इसमें दो चीजें होती हैं. अब ये कैसे पता किया जाए कि the number of rain gauges we have installed is perfectly accurate or not? अभी तो मैंने आपको बहुत simplistic figure दिखाया, but it's very complicated in case of catchment. This is a catchment, so maybe you put a rain gauge here, 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 here. Now how to know that how many rain gauges are adequate? And if suppose you have some n number of rain gauges, suppose you estimated that okay, this many number of rain gauges I need to have in my catchment, and after that maybe one rain gauge is not operational for some year, then how to find out the missing rainfall value? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये मिसिंग रेनफॉल वैल्यू कैसे निकाली जाती है. देन विल मूव ऑन टू एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ रेन गॉजेस और द एडिक्वेसी ऑफ द रेन गॉजेस. ठीक है, जस्ट गिव अ हेडिंग estimation of the missing rainfall data. Estimation of the missing rainfall data. ठीक है, तो प्रॉब्लम आप सब लोगों को समझ में आ गई है. हमारे पास कुछ नंबर ऑफ रेन गॉजेस हैं जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं किसी कैचमेंट में. There could be a case that some particular rain gauge may be some, let's say this is some X rain gauge which has gone inoperational during an year. ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर ईयर की सपोज अब ये कोई 2005 में इनऑपरेशनल हो गया, तो अब इस 2005 ईयर में जब इनऑपरेशनल हुआ तो इसकी जो मिसिंग रेनफॉल वैल्यू वो कैसे निकाली जाए. ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरीके के डेटा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा विच आर इन ऑपरेशन. वन इज द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल and another one is the rainfall of that particular year or the annual precipitation data. एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा. ठीक है, दो तरीके की चीजें हैं. तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? This annual precipitation data is the yearly precipitation or the sum of the all the precipitations in a particular year. ठीक है, अब सपोज वो 2005 का, मुझे क्या है 2005 के लिए मिसिंग है डेटा, तो मैं 2005 का डेटा यहां से उठाऊंगा. ठीक है, और जितने भी रेन गॉजेस हैं we will collect the annual precipitation data for all those rain gauges which are installed in the particular station except for that particular station which has not recorded the rainfall value. ठीक है, समझ में आ रहा है? जितना भी एनुअल प्रेसिपिटेशन हम सारे रेन गॉज स्टेशंस के लिए कलेक्ट करेंगे, और एक ऐसा स्टेशन है सपोज स्टेशन एक्स है जिसका प्रेसिपिटेशन डेटा हमारे पास नहीं है, right? So we will generally denote it by capital letter P, this annual precipitation data. So we'll mark the precipitation data as PA, PB
अब ये स्टेशंस के नाम है ए बी सी डी, मैंने कुछ भी डिनोट कर दिया, ठीक है। देखिए, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ स्टेशंस लाइक दैट, ठीक है। सो देयर आर वेरियस normal precipitation data PA, PB, PC, PD, maybe up to PN, ठीक है। and out of these one data that is PX is missing। अगर ये 2005 का डेटा है तो ये जो पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन डेटा है PX ये मिसिंग है। ये समझ में आ गई चीज? anyone has any doubt up to here? No? So this was all about annual precipitation data। अब इसके अलावा one more data is used here, that is the normal annual rainfall data। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा क्या है? नॉर्मल, ठीक है। यूजुअली what is the rainfall that occurs over a particular area or for a particular rain gauge station? Usually means that will be an averagized value of many years of the rainfall data, ठीक है। For suppose you might be collecting data from 1980 to 2005, ठीक है। अब ये जो है ये इनका एक एवरेजाइज्ड वैल्यू है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा और द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा, ठीक है। ईच एंड एवरी ईयर आई एम कलेक्टिंग सम एनुअल रेनफॉल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर स्टेशन एंड सो सिमिलरली सपोज कितने साल का हो गया, फॉर से 25 years of data I have collected, so I'll have 25 number of annual precipitation data and the average of that is the normal annual rainfall data, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा क्यों यूज होता है? जस्ट टू हैव एन आइडिया दैट हाउ मच रेनफॉल in general a particular rain gauge station is receiving, ओके okay? ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर एन से, कैपिटल एन से, ठीक है। तो हर रेन गॉज स्टेशन के लिए एक नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा भी होगा, राइट। So we'll have for each rain gauge station a normal annual rainfall data NA, NB, NC, ND up to so on, ठीक है। Now can someone tell me that would we be having the normal annual rainfall data for station X? Yes, Station sir. X, yes, Yes, sir. होगा सर। होगा ना, राइट right. क्योंकि ये एवरेजाइज डेटा है बहुत सारे सालों का, तो ऑब्वियसली विल आल्सो बी हैविंग डेटा फॉर द स्टेशन एक्स which will be included in all these data, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा we have for all the stations, but we don't have this px data for present annual precipitation, ठीक है। अगर मैं आज की बात करूं, इस साल में हो सकता है कोई स्टेशन इनऑपरेटिव हो गया, उसका डेटा नहीं मिल पाया। सो दिस इज द डेटा दैट आई वांट टू फाइंड। नाउ इफ द प्रॉब्लम इज प्रीटी क्लियर टू यू, नो वन हैज एनी डाउट? अगर है तो भी बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, ठीक है। सो there are some set of rules which you have to follow to find out this value of px which is unknown, right? So just write down the annual precipitation values, the annual precipitation values, इसको PA, P2, PB, PC कर लो या P1, P2, P3 कर लो, जैसा भी मानो, ठीक है। P1, P2, P3 up to PM of M neighboring stations
of n neighboring stations are known रिमेंबर दिस इज m नेबरिंग स्टेशंस, ठीक है। इसमें हमने px को काउंट नहीं किया है क्योंकि px तो हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, px के m नेबरिंग स्टेशंस हैं, ठीक है। सपोज देर आर टोटल ऑफ 7 stations and this px is inoperative or this station x is inoperative, then we have 6 neighboring stations। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हम नेबरिंग स्टेशंस की बात कर रहे हैं इस डेटा में, ओके। For station 1 2 up to m. Now it is required to find out, further right, it is required to find out the missing annual precipitation. It is required to find out the missing annual precipitation px at station x not included in the above m stations, not included in the above m stations। Paras, why you are so late? Sir, can you repeat the last sentence, sir? Yes, sir. Okay, I'm repeating the entire thing. The annual precipitation values P1, P2, P3 up to Pm at small m neighboring stations are given. It is required to find out the missing annual precipitation Px, at station x। Sir, there was no light actually, so चलो ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। sorry. Sir. Missing annual precipitation Px at station x not included in the above small m stations, not included in the above small m stations। Further right, the normal annual precipitations n1 n2 n3 up to any number, सपोज ni। अब यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली मुझे m+1 लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम एनुअल प्रेसिपिटेशंस की बात कर रहे हैं, सॉरी नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑल द इंक्लूड स्टेशंस आर इंक्लूडेड। सो हाउ मेनी स्टेशंस आर देयर इन टोटल? m+1, right? So we have this data for all the m+1 stations। ठीक है, तो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन n1 n2 n3 up to n m+1 including station x is known or are known। ठीक है, राइट। केस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन इन द रेनफॉल ओवर द एंटायर कैचमेंट और नॉट। तो वो हम कैसे देखते हैं कि सपोज अब आपका रेफरेंस कौन सा है? रेफरेंस हो जाएगा आपका स्टेशन एक्स जिसकी रेनफॉल डेटा मिसिंग है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो डेटा होने चाहिए जो कि एक px हमारे पास नहीं है and nx is available with us।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस nx डेटा को लेते हैं and then we compare with the other n datas or other normal annual datas of other neighboring stations na nb और या n1 n2 n3 जो भी आपने लिखा हो, n3 up to nm। ठीक है, जो n नेबरिंग स्टेशन है उन सब से हम कंपेयर करते हैं वन बाय वन। क्या कंपैरिजन करते हैं, that whether all these datas vary more than 10% from nx or not। ठीक है, ये हर एक स्टेशन के लिए देखना है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए इसका जो एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा है, जो nx वैल्यू है इस पर्टिकुलर स्टेशन x की, दैट इज 100 mm और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, so if any of the data, even a single data, lies outside plus minus 10% range, that if it lies outside between a range of 90 to 110 plus 10% and minus 10%, अगर एक भी ऐसा स्टेशन है तो मतलब देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, एंड इफ ऑल द n1 to nm values lie within this range of 90 to 110, then we can assume that there is no much variation in the precipitation data। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, कैचमेंट में प्रेसिपिटेशन मोर और लेस यूनिफॉर्म है या नहीं है, ये इसको देखने का तरीका है। सो उसके लिए एक पैरामीटर डिसाइडेड है प्लस माइनस 10% के लिए। ठीक है, नाउ राइट डाउन केस 1। if the normal annual precipitation if the normal annual precipitation of m neighboring stations of all the n neighboring stations lie within plus minus 10% range, lie within plus minus 10% range of nx, then the rainfall variation is assumed to be more or less uniform and px is calculated by, px हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल एक अरिथमेटिक मीन ले लेंगे बाकी के सारे स्टेशंस का। ठीक है, याद रखिएगा कंपैरिजन होता है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल से, जो कैलकुलेशन होता है इस केस में वो सिर्फ पी वैल्यूज पे होता है, यानी प्रेजेंट ईयर या जो मिसिंग ईयर है, जिस ईयर में डेटा मिस हुआ है, फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली वी विल मेक ऑल द कैलकुलेशंस। ठीक है, जनरली ये प्रॉब्लम क्या होगी, प्रेजेंट ईयर की होगी, क्योंकि आप जब डेटा निकालेंगे तो प्रेजेंट ईयर में जो मिस हुआ होगा वही निकलेगा ना, अगले साल तक तो वो डेटा आप निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट ईयर की प्रॉब्लम है ये। सो लेट्स टेक एन अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दिस precipitation data up to pm, करेक्ट। सो सिंपल अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं ये मान के कि देयर इज नॉट मच वेरिएशन, and a simple arithmetic mean will not give much of an error। ठीक है, समझ में आ रही है। राइट,
Now write down case B. Case B. Yeah, case 2. If the rainfall or if the normal annual precipitation of any of the rain gauge stations vary more than plus minus 10% of nx, then px is calculated by, इस केस में हम क्या करते हैं, फिर वेटेड एवरेज पे जाते हैं. तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस वेटेड एवरेज? ठीक है, सो दिस इज द वे. ये क्या तरीका है, इसको समझिए पहले, ये है क्या चीज. ठीक है, अभी देखिए ये जो रेशियोज हैं, ये जो सारे रेशियोज हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? दैट इज दे आर शोइंग द वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो. ठीक है, अब जितना ज्यादा वेरिएशन होगा एनुअल और नॉर्मल एनुअल रेनफॉल का, उसके हिसाब से ही हमने इस वेटेड एवरेज को डिसाइड किया हुआ है. ठीक है, समझ में आ रही बात? अभी इसको इस तरीके से देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूं कि 1 अपॉन m nx अपॉन n1 इंटू p1 प्लस nx अपॉन n2 इंटू p2 प्लस अप टू nx अपॉन nm इंटू pm. सेम फॉर्मूला. ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, अब ये शो करता है कि कितना वेरिएशन है of the normal annual rainfall of station X and the normal annual rainfall at any other station. ठीक है, और जितना वेरिएशन है हम उसको उस स्टेशन की रेनफॉल वैल्यू से वेटेड कर देते हैं, उसको उतना वेटेज देते हैं जितना उसकी रेनफॉल वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय दैट. ठीक है, सपोज किसी रेन गॉज स्टेशन की रेनफॉल वैल्यू हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है, और उसका वेरिएशन भी ज्यादा हो. तो अगर सपोज P1 की रेनफॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसका वेरिएशन भी ज्यादा है, तो उसको वेटेज जो होगा इस पूरे कैलकुलेशन में वो भी ज्यादा मिलेगा. राइट, द रेन गॉज स्टेशन विथ अ हायर वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एंड विथ अ हायर रेनफॉल, दोनों ही चीजों का हम वेटेज देते हैं. हायर वेरिएशन, हायर वेटेज. All right, and then finally we calculate this value of px. Okay, you got the thing? What is the fundamental behind all these calculations? So I hope you will be able to do it. So just write down numerical quickly. The normal annual rainfall at stations A, B, C, D, A, B, C, D, in a basin are 80.97. I'm writing in sequence for all the stations. 67.59, that's for station B.
Then we have 76.28 for station C, and then we have 92.01 for station D. कौन सी values हैं ये? These are normal annual rainfall values. So you can write this in the form of NA, NB, NC, and D. Okay. Further right, in a year 1975, the station D was inoperative. कौन सी वैल्यू मिसिंग हो गई? Which value is missing? PB, sir. PD. Correct? So we would be having some PA, PB, PC data, but PD will be missing. And the annual precipitations at A, B, and C were 91.11, 72.23, and 79.89 centimeter respectively. This one will become your station X. Okay? So this PD value is unknown and we need to find out this PD value. So you have to estimate the rainfall at station D in that year. पहले क्या करेंगे? Yes, प्रद्युमन. Yes, sir. क्या करना चाहिए पहले? PD डिटरमाइन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? कर्मा. सौरभ. सर हमें देखना पड़ेगा कि ये वैल्यूज 10% रेंज के विद इन है या किसकी फिर 10% रेंज? 10% रेंज ऑफ दिस नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन. किसका? Which value? Can you tell me the particular value? सर ये ND की वैल्यू. ND की value, right? Yes. So now this will become my NX. अब यही स्टेशन X है ना, तो इसका नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा NX बन गया, मतलब ये 92.01 जो है वो NX बन गया. So now just check out plus minus 10% value of this 92.01. ठीक है, पहले क्या करेंगे आप? चेक फॉर प्लस माइनस 10% ऑफ NX और 92.01. तो कितनी रेंज बनती है? पहले जस्ट टेल मी द रेंज. क्या रेंज बनेगी? 92.01 plus 10% to 92.01 minus 10%. Just tell me that. Just tell me the answer.
Yes, come on, come on. क्या कर रहे हो भाई? तुमसे सारा सिंपल सा नहीं निकल रहा। पारस शर्मा, पारस शर्मा, लेट भी आ रहे हैं लोग, फिर गायब भी हो जा रहे हैं। दिस इज नॉट फाइन। Remember, those people who have not responded, I'll mark them absent. This is the rule of the class. Saurabh Kharyal, So 82.809 to 101.211. 101.21. नहीं सर, स्टार्टिंग में आएगा सर 82.809. ठीक है, इसको 81 कर देते हैं। देन नेक्स्ट वन इज प्लस वन वैल्यू क्या है? 101.211. ओके, तो now check all the rainfall values, the normal annual rainfall values, that whether they lie in this range or not. Just check. 80.97 है क्या रेंज में? नहीं है, राइट? बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। कोई एक भी बाहर हो गया तो दैट मीन्स कौन सा केस लगेगा अब? विच केस विल फॉलो? Case 2. Case 2. केस 2, राइट? सो केस 2, केस 2 क्या कहता है कि देन द रेनफॉल एट द स्टेशन x, px or pd will be given by what? nx upon m, p1 upon n1 plus p2 upon n2 plus up to pm upon nm. कितने नेबरिंग स्टेशन हैं? How many neighboring stations are there? अरे भाई, कितने नेबरिंग स्टेशन है? 4 टोटल? sir. यस, 4 sir, 4. नहीं sir, 3. 3, राइट? नेबरिंग स्टेशन आर 3, 4 तो टोटल है, ठीक है? सो nx, दैट इज द nd वैल्यू। nd वैल्यू कहाँ है हमारी? 92.01. So just write down 92 point, what happened? 0.01 divided by m neighboring stations, that is 3. Then p1 upon n1. What is p1 value? देखते जाइए और लगाते जाइए. Now this p1 will become pa, n1 will become na. स्टेशन ए के लिए हो गया. Similarly this for station b and the last one for station c. ठीक है, देखिए क्या है वैल्यूज. I think p1 is 91.11 divided by corresponding n value of the station A, 80.79. ठीक है, plus then similarly for station B 72.23 and 65.59 and plus 79.89 divided by 76.28. ठीक है, just calculate it down and tell me the answer. 99.41. 99.41. Yes sir. Anyone else getting the same answer?
Anyone else getting the same answer? Yes, sir. Okay, so it's 99.41. ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिसिंग रेनफॉल डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर 1975 आई थिंक. Yes, for 1975. ठीक है, everything is clear to everyone? Anyone has got any doubt? No?